ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 15. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் தேர்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 15. சனகாதிகள் ஜெய விஜயர்களை சபித்தல். மைத்ரேய உவாச்ச பிராஜாபத்யம் து தத்தேஜ பரதேஜோஹனம் திதிஹி ததார வர்ஷாணி சதம் शङ्कमानासुरार्धनात् लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे द्वान्धव्यतिकरं दिशां देवाऊचुः तमयेतद्विभो वेत्थ संविघ्नायद्वयं भृशं न ह्यव्यक्तं भगवत कालेनास्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगद्धातर् लोकनाथः शिखामणे परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय माययेधमुपेयुषे गृहीत गुणभेदाय नमस्देव्यक्तयोनये ये ध्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोत भुवनं परं सदसदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः स त्वं विदत्स्व शम्भूमन् तमसा लुप्तकर्मणाम् अदप्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्हसीक्षितुम् एष देवदितेर्गर्भ ओजकाश्यपमर्पितं दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धदेग्निरिवैधसी मैत्रेय उवाच स प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्यासष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुष्मत् पूर्वजासनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः त एकधा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिं यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन् वृषः यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामधुगैर्द्रुमैः सर्वर्धुश्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत् वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः पारावतान्यभृतसारसचक्रवाह दात्यूह हंससुखतित्तिरिबर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैः भृङ्गादिपे हरिकथामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुरभोत्पलशम्बकार्न पुन्नागनागबगुलाम्बुजपारिजाताः
गन्धेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिंस्तप सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैः वैधूर्यमारकतहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आधदुरुत्स्मय याद्यैः श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्मणिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः वापीषु विद्रुमतट्टास्वमलामृताप्सु प्रेक्ष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादा शृण्वन्ति येऽन्यविषया कुकथामधिग्नीः यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरातसाराः तां क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्त ये व्यर्तितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया पदमायया ते यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्यपरिणस्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मितसुयशस कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाग्र्यविमानशोचिः आपोपरामुदमपूर्वमुपेत्य योगम् आयाभलेन मुनयस्ततधो विकुण्ठम् तस्मिन्नतीत्य मुनय षडसज्जमानाः कक्षासमानवयसावत सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य केयूरकुण्टलकिरीटविटङ्गवेशौ मद्दद्विरेपवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ द्वार्येतयोर्निविविशुर्मिषतोरभृष्ट्वा पूर्वायता पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनय स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविगता विगदाभिसङ्काः तान् वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरकुमारान् वृद्धान्तसार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्कलयतामतदर्हणांस्थौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ ताभ्यामिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्हत्तमाह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचु सुहृत्तम् अधिदृक्षितपङ्ग ईक्षत् कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षाः मुनय ऊचुः को वामिहैत्य भगवत्
परिचर्ययोच्छैः दद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गदविग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयोपरि सङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोऽसुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्ददीव्याम् लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डनिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुर्बिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामतिकातरेण भूयादघोनि भगवद्भिरकारिदण्डो योनौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मावोऽनुतापकलया भगवत्स्मृदिघ्नो मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतोरधोधः एवं तथैव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदधिक्रममार्यहृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंसमहामुनीनाम् अन्वेषणीयचरणौ चलयन् सह श्रीः तं त्वागतं प्रतिहृप्तौपैकं स्वपुंभिः ते सक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोल शुभ्रादपत्रशशिकेशरशिखराम्भुम् कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संसपृशन्तम् श्यामे पृतावुरसि शोभितया श्रिया स्वश्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम् पीतांशुके पृथुनितम्भिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्ह घण्टस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम् धोर्दण्डषण्डविवरे हरतापरार्घ्य हारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति सोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गम् नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुधाकैः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रुतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्तधन्वोः ते वा अमुष्य वदनासितपद्मकोशम् उद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम् लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्री
त्वन्द्वं न कारुणमनिश्रयणं निदद्युः पुंसां गतिमृगयतामिह योगमार्गैः ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम् पौंस्नं वपुर्दर्शयनामनन्यसिद्धैः औपत्तिकै समगृणन् युतमष्टभोगैः. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 46-50. ಸನತ್ಕುಮಾರರ್ಗಳ್ ಸ್ತುತಿ. ಕುಮಾರಾ ಊಚುಃ ಯೋऽन्तರ್ಹಿತೋ ಹೃದಿ ಗತೋऽಪಿ ಧುರಾತ್ಮನಾಂ ತ್ವಂ ಸೋದ್ಯೈವ ನೋ ನಯನಮೂಲಮನन्तರಾद्धಃ ಯರ್ಹ್ಯೇವ ಕರ್ಣವಿವರೇಣ ಗುಹಾಂ ಗದೋ ನಃ ಪಿತ್ರಾಣುವರ್ಣಿತರಃ ಭವದುದ್ಭವೇನ ತಂ ತ್ವಾಂ ವಿಧಾಮ ಭಗವನ್ ಪರಮಾತ್ಮತತ್ವಂ ಸತ್ವೇನ ಸಂಪ್ರತಿರತಿಂ ರಚಯಂತಮೇಷಾಂ ಯತ್ತೇನುತಾಪವಿದಿದೈ ದೃಢಭಕ್ತಿಯೋಗೈಃ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಯೋ ಹೃದಿ ವಿಧುರ್ಮುನಯೋ ವಿರಾಗಾಃ ನಾತ್ಯಂತಿಕಂ ವಿಗಣಯಂತ್ಯಪಿ ತೇ ಪ್ರಸಾದಂ ಕಿಂದ್ವನ್ಯದರ್ಪಿತಭಯಂ ಬ್ರುವ ಉನ್ನಯೈಸ್ತೆ ಯೇಂಗತ್ವತಂಗ್ರಿಶರಣಾ ಭವತಃ ಕಥಾಯಾಃ ಕೀರ್ತನ್ಯತೀರ್ಥಯಶಃ ಕುಶಲಾರಸಜ್ಞಾಃ ಕಾಮಂ ಭವ ಸ್ವವೃಜಿನೈರ್ನಿರಯೇಷು ನಶ್ಚಾತ್ ಚೇತೋಲಿವದ್ಯತಿ ನ ತೇ ಪದಯೋರಮೇತ ವಾಸಶ್ಚ ನಸ್ತುಲಸಿ ವದ್ಯದಿ ತೇಂಗ್ರಿಶೋಭಾಃ ಪೂರ್ಯೇತ ತೇ ಗುಣಗಣೈರ್ಯದಿ ಕರ್ಣರಂಧ್ರಃ ಪ್ರಾದುಶ್ಚ ಕರ್ತ ಯದಿದಂ ಪುರುಹೂತರೂಪಂ ದೇಶೇ ನಿರ್ವೃತಿಮವಾಪುರಲಂ ದೃಶೋ ನಃ ತಸ್ಮಾಯಿದಂ ಭಗವತೆ ನಮಯಿದ್ವಿಧೇಮ ಯೋ ನಾತ್ಮನಾಂ ದುರುಧಯೋ ಭಗವಾನ್ பிரதீதः. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 15வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.